हम थे, ये पढ़ो क्या लिखा है। Okay for now. यस, क्या मतलब है इसका? Make a sentence. यस, वेरी Make गुड। the तो sentence. वेरी गुड, तो आई एम गिविंग यू अ हिंट। मैं आपको एक हिंट दूंगा, आप उससे सेंटेंस बनाओ। जस्ट या रीड दिस वन। Rasgulla. यस, क्या होता है रसगुल्ला? We did this last week. Rasgulla. Is it a type of sweet? यस, स्वीट, राउंड शेप, वाइट इन राउंड Mm-hmm. शेप लाइक दिस। TK. तो इससे एक वाक्य बनाओ, मेक अ सेंटेंस यूजिंग इट। Muji Rasgulla Pasand hai. बहुत बढ़िया। यस यस, तो मुझे रसगुल्ला पसंद है। एंड नाउ दिस वन, रीड दिस वन। Haman Rasgulla Pasand nahi hai. वेरी गुड, तो हमें it's पसंद। I told Um, you before, whenever we are having the sentences like पसंद, so the mm-hmm, the pronoun is used as objective pronoun. Okay, so it's that's why it's mm-hmm, not हम, it's हमें। ओके, तो हमें mm-hmm. रसगुल्ला पसंद नहीं है, इसका क्या मतलब है? Um, we do not like Rasgulla. बहुत बढ़िया, बहुत No. बढ़िया, Oh, yeah. बहुत बढ़िया, करेक्ट। लेट्स हैव द नेक्स्ट। क्रिकेट का खेल, रीड दिस। Cricket cacao. इसमें सेंटेंस बनाओ, वाक्य बनाओ। Um, uh, so, Haman cricket cacao chahiye. चाहिए। No, not chahiye. Um, uh, what? What would it be? It's not chai. No. Oh, okay. Tumhen cricket cacao pasand hai. Very good. So here you can see pasand. This pasand is coming in the sentence. So you are not using tum. You are using tumhe, है Mhm. ना? And hum Mhm. is not used, but we are using hame. Okay. So like this, है Mhm. ना? तो मैं will be used as मुझे, है ना? This a sound. Mhm. आप, आपको, like this. तो तुम्हें क्रिकेट का खेल पसंद है, इसका क्या मतलब है? You like to play cricket? वेरी गुड, द गेम ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का खेल, Mhm. गेम ऑफ क्रिकेट। ओके, Okay. You like to play the game of cricket. वेरी गुड। अब ये पढ़ो, ये क्या लिखा है? Utaden बहुत बढ़िया, Gibansa. बहुत बढ़िया। तो पढ़ो, ये क्या लिखा है? Kya tumhem angur chahiye. वेरी गुड। तो क्या मतलब है इसका? Angur मुझे नहीं पता. नहीं पता। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग। सो देयर इज वन थिंग, शुड, ओके, एंड नीड in Hindi both have meaning चाहिए। Okay, Mhm. so चाहिए when it's should, so it you understand why we use should, and when it's need, required something, that time also we use चाहिए। So whenever these words, Mhm. these modals comes and पसंद like come, so in this form चाहिए और पसंद, the same thing, the pronoun is used as the objective pronoun, okay, having the a sound over it. Got it? Okay. Okay, so in this sentence chahiye, what is the meaning? It's need or should? What does anger mean? Angur, angur is grapes.
Angur. Sorry, Grapes. great. So it's need. Yes, Need. need. Very good. Yes, it's need. Okay. So now translate it. Do you need grapes? Very good. Do you need grapes? तो बताओ मुझे आंसर दो. Do you need grape? आपको Um, अंगूर चाहिए? uh, Han, मुझे Angur चाहिए. बहुत बढ़िया. Yes, answer is जी हाँ. है ना? जी is for respect. मुझे अंगूर चाहिए. That I Mhm. think is perfectly fine. So let's have the next one. So उत्तर दें. Yeah. Give. Uh, क्या तुम्हें फूल चाहिए? Very good. It, Fool is do flower. you need flowers? Very good. Do you need flower? So here also चाहिए means need. Okay. Need. And in this case, the pronoun is used as a sound. Okay. तुम्हें. Objective Mhm. pronoun. That means to you. Okay. Yes. तो बताओ क्या तुम्हें फूल चाहिए? जी नहीं. मुझे फूल नहीं चाहिए. बहुत बढ़िया. मुझे फूल नहीं चाहिए. तो सेम सेंटेंस. जी नहीं मुझे फूल नहीं चाहिए. Very good. So yes, read this one. उत्तम. क्या आपको आज का अखबार चाहिए? Very good. तो इसका क्या मतलब है? Do you need today's newspaper? Very good. So here you can see आप is used as आपको, है ना? आपको. Mhm. While तुम is used तुम्हें, है ना? And we can also use तुमको if you want. So this is also we can use तुमको. Okay. And Okay. मैं is used as मुझे. So you also can use Mhm. मुझको. Okay, मुझको. But मुझको. these are the Okay. shortcut. मुझे, तुम्हें, हमें. Okay. तो आपको Mhm. आज का अखबार चाहिए. वेरी गुड. तो बताओ क्या आपको आज का अखबार चाहिए? जिहान, मैं आज का अखबार चाहिए. नॉट मैं, मुझे. मुझे मुझे आज मुझे. का अखबार चाहिए. Yes, so here you can see the question is आपको. So answer should be in this same form. तो मुझे, मुझे मैं is मुझे. मुझे और मुझको. मुझे और Mhm. मुझको. वेरी गुड. तो मुझे और मुझको Okay. आज का अखबार चाहिए. Let's see the So answer. जिहान, मुझे आज का अखबार चाहिए. Very. So उत्तर दें. Read Uh, this one. क्या क्या लीला को यह रंग पसंद है? है. Very good. So here you can see पसंद and the को is coming, है ना? To show the objective Mhm. pronoun that is to लीला, है ना? Third person is Uh, used with the name is used with को. Like we are using आपको, um, है ना? So this को is coming with the name as well. आपको so Leela is a name. is a name. Yes. Okay. So does Leela like this color? Very good. This color. Wonderful. So बताओ क्या लीला को यह रंग पसंद है? Hinahin, Leela ko yarang nahi pasand. Very good. तो बट आंसर इज जी हाँ. वेरी गुड. जी हाँ लीला को यह रंग पसंद है. ओके. लेट्स नेक्स्ट वन. Mhm. इसका क्या मतलब है? जी हाँ लीला को यह रंग पसंद है. One more time, sorry. द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? जी हाँ लीला को यह रंग Um, पसंद uh, है. yes, Leela likes this color. वंडरफुल. तो पसंद इज लाइक. तो अब सेम क्वेश्चन. यस. नाउ रीड दिस वन. Uh, Kya Chacha Ji ko Hindi uh, fil, film film फिल्म. फिल्म. pasand वेरी film
क्या चाचाजी को हिंदी film पसंद है? Yeah, very good. So Um, here you can see Pasand and the Chachaji is followed mhm. by Ko, because we know when we So, Pasand Chahiye, so we just use Ko after the pronoun. So Chachaji is a pronoun, है ना? Now, after Yes. pronoun. Um, so does does uncle like Hindi films? बहुत बढ़िया. Does uncle like हिंदी फिल्म? बताओ तो क्या अंकल को हिंदी फिल्म पसंद है? Jihan, चाचा जी को हिंदी film पसंद है. बहुत बढ़िया. चाचा जी को हिंदी फिल्म पसंद है. You can note them down, like I'm telling you ना, that whenever we are using I'm I'm पसंद, screenshot. okay, पसंद, I just one more time, चाहिए, है ना? So the pronouns are followed by को, है ना? CK. Yes, the answer is this. The answer. जी नहीं, चाचा जी को हिंदी film पसंद नहीं है. Very है. good. इसका क्या मतलब है? No, uncle does not like Hindi films. Very good. बहुत बढ़िया. अब बताओ, उत्तर दें. Uh, Oh, cha. I don't know where is the question. Yes, I'm gonna give the question first. Yes. Okay, so this is the question. Read this one. Uh, आपको आपको कित 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 कितने फूल चाहिए? Very good. तो इसका क्या मतलब है? चाहिए. Again, you can see Uh, चाहिए is followed by, when चाहिए तो pronoun is followed by को. Here you can see को. आपको. हाँ. Um, so ki- how many flowers do you need? Very good. तो कितने is how many or how much. If you can count, तो how much. If you don't count, so it's how many. Okay. If you don't, Okay. if you cannot count, then how much. And if you can count, तो how many. So now flowers can be count. हाँ. आपको कितने फूल चाहिए? मुझे 10 फूल चाहिए. Oh, you So want I me have to given use you that? this. Okay. Yes. मुझे 4 फूल चाहिए. Very good. मुझे 4 फूल चाहिए. तो answer can be. I just forgot to write the answer. Okay. But yes, perfect. Okay. So now Chitro one. The question is this question. Okay. आपको कैसी किताब चाहिए? Okay, so इसका क्या मतलब है? Again चाहिए तो आप is followed with को. Okay. Mhm. Um, कैसे कैसी. yes, my brain just went a bit blank there. Uh, कैसी is how or how which type how or which type how of book or which uh, or which type. ca- how which type. Um, so down there it says Chitron Yes, Chitro Valley. Wali. That means Wali is the one Um, who have pictures. Okay. okay, so what does Valley mean? Wali means uh, the one who is having like ये वाला वो this one that one है ना, pictures one who have the pictures that one, like this, that time we use Wali. Okay, like when we say So that one, that means वो, so that वो. Chitron. Yes, Okay, sorry. Uh, so Chitron Valley means one with pictures, which has pictures. Okay, which has. so you can count this as which has. Okay, Wali. One more thing you can hear, can hear, like that one. Okay, so that one means that is wo and one is Wali here. Okay, so this one, so this is ye
and one is wali, like this. Okay, ye wali, wo wali. So that means they are Oh, pointing at some particular thing. Ye wali, yeah, which have these things speciality which I like. Okay, what I like, that okay. specialty one. Okay, ठीक है. So आपको कैसे किताब चाहिए? Uh, मुझे uh, मुझे चित्रण वाली किताब चाहिए. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मुझे चित्रों वाली किताब चाहिए, बहुत बढ़िया. द बुक विच हैज पिक्चर्स. So yes, let's see the question. Take this one. आपको और क्या चाहिए? Very good. तो बताओ उसका क्या मतलब है. Um, do you need more? No. Yeah. Um, What more? more. What? What more you like or you want? Okay. Okay. So आपको और क्या चाहिए? Yes. What more would you need? Okay. So Yes. uh, so मुझे कुछ नहीं चाहिए. Wonderful. मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो उसका क्या मतलब हुआ, मुझे कुछ नहीं चाहिए. I need Uh, nothing. Okay? So कुछ मुझे नहीं is nothing. नहीं चाहिए. I need nothing. ठीक है. Let's have the next one. So yes. Let's see the question. And So नीला. Uh, भावना को कौन सा रंग पसंद है? very good. कौन? कौन सा is which one? Bhav- Bhavna, uh, which color does Bhavna like? Like. Yes, so yeah, this size also like कौन सी वाल कौन सा वाला, you can also use कौन सा वाला रंग पसंद है. Okay, so you can also use this वाला here, which one. Okay, so very good. भावना को कौन सा रंग पसंद है, बताओ. Which color भावना Um, likes. so Bhavna को नीला रंग पसंद है. बहुत बढ़िया, भावना को नीला रंग पसंद है. That means भावना likes blue color. नीला is blue. Uh, blue blue color. Now आप आप आपको कौन सा pen पसंद है? very good. Uh, which pen would you like? Very good. Would you like, नहीं, which pen do you like? Mm-hmm. Okay. So मुझे ball pen पसंद है. बहुत बढ़िया, तो इसका क्या मतलब है, मुझे बॉल पेन पसंद है. आई लाइक बॉल पेन. One more time. Oh yeah, I like ball pens. Same question. Yeah. So